Hello students and welcome back. In today's video, we are going to discuss about sound needs a medium to travel through. ठीक है कि साउंड को एक मीडियम चाहिए होता है टू डू द ट्रैवलिंग. ठीक है, फॉर एग्जांपल द एयर थ्रू विच द साउंड ट्रेवल इज कॉल्ड अ मीडियम. ठीक है, तो हमारे पास अगर हम अर्थ की बात करें तो वी हैव अ मीडियम दैट इज एयर जिसके थ्रू हमारी साउंड जो है वो ट्रैवल करती है. इफ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ आउटर स्पेस, ठीक है, there is actually no medium in outer space and there is no air, there is complete silence in the outer space, and sound cannot travel through outer space because it is a vacuum that contains nothing to carry the sound. ठीक है, तो ये क्या है, इस स्पेस को हम कहते हैं कि ये वैक्यूम है क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसा मीडियम नहीं है. इट हैज नथिंग ऑफ अ मीडियम सोर्स दैट हेल्प्स द साउंड टू ट्रेवल. ठीक है, तो आउटर स्पेस में जितनी भी एक्सप्लोजन्स होती हैं या जितने भी जो भी आउटर स्पेस में साउंड प्रोड्यूस होती है, वी कैन नॉट हेयर इट, राइट, बिकॉज it has no medium and the sound cannot travel in outer space. So we have discussed that air through which sound travel is called a medium, and a medium can be anything. It can be a liquid, for example water. It can be a solid, for example a wall. It can be a gas, for example air. Sound travels faster in solids than in liquids. ठीक है, तो हमें क्या पता चला है कि साउंड जो है वो सॉलिड में it travels faster. हम यहाँ लिखेंगे कि it travels faster, और liquid में it doesn't travel that much faster, and gas में it actually is mostly slow. ठीक है, तो इफ़ वी हैव टू टेक एन एग्जांपल, तो हम ये एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर एक रूम में बैठ के वी आर प्लेइंग द म्यूजिक, वी कैन हियर दैट म्यूजिक इन अनदर रूम. ठीक है, द वॉल्स अराउंड अस, द डोर्स अराउंड अस आर एक्चुअली अ मीडियम, जो कि हम कहेंगे कि ये सॉलिड मीडियम है, लेकिन इससे भी साउंड ट्रेवल कर जाती है. इसी तरह अगर हम एग्जांपल लें फिशेस की, राइट, जो कि पानी में होती हैं एंड दे आल्सो मेक साउंड्स, राइट, तो हमें वो साउंड जो है वी कैन नॉट एक्चुअली हेयर देम वेरी लाउडली आउटसाइड, क्योंकि लिक्विड में आपको साउंड जो है वो इतनी ज़्यादा जल्दी जो है वो ट्रैवल नहीं करती. ठीक है, so these are some of the examples that you can have of um, sound being traveled through different mediums. ठीक है, all right, moving on to the next slide, and we are going to talk about noise pollution. ठीक है, noise pollution is what we call sound that hurts our ears or is very unpleasant. ठीक है, exposure to loud noises is not good for your health. Scientists have found that people who have to work with noisy equipment or live in noisy neighborhood are more likely to suffer from stress and other health problem as well as hearing loss. They have also found out that children learn better in quiet environment. ठीक है, तो हम अगर बात करते हैं साउंड की, तो it brings the topic of noise pollution, and noise pollution is created when the loud sounds are created and they um, feel unpleasant to your ears, right, तो इनको हम noise pollution कहते हैं. But beside that, let's talk about echoes. What is echo? A sound made in large empty rooms produce an echo. ठीक है, अगर आप large empty room में, खाली कमरे में जो है साउंड प्रोड्यूस करते हैं, बोलते हैं, तो इट क्रिएट्स एन एको. ठीक, आपको आपकी आवाज़ गूंज के दोबारा सुनाई देती है. An echo is produced when sound waves bounce off surface. ठीक है, echo कैसे प्रोड्यूस होती है, जब आपके साउंड वेव्स जो हैं, जो आप
आवाज अगर बोल रहे हैं तो वो जाके बाउंस करती है सरफेस पे। इन दिस केस अगर लार्जर रूम है तो वो जाके बाउंस करती है वॉल पे एंड इट कम्स बैक, राइट। तो इसको हम एको कहते हैं। When there are many objects in the room or there are lots of soft materials like clothes, cushion, etc., the sound waves are absorbed and do not bounce back. A bat uses echoes to tell where it is going. It makes high pitched squeaking sounds. These sounds bounce off objects and back to the bat ear. So you can अंडरस्टैंड व्हाट एको इज। और एको जो है, अगर आपके रूम में काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, अगर आप एग्जांपल लें बेडरूम की, तो देयर आर लॉट ऑफ क्लोथ ओवर देयर, देयर आर डिफरेंट फर्नीचर्स ओवर देयर, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब आप साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो वो डिफरेंट चीज़ों में अब्जॉर्ब हो जाती है साउंड, एंड इट डज नॉट एको। लेकिन इफ़ द रूम इज़ एम्प्टी, व्हाट विल हैपन कि आपकी वॉइस जो है वो जाके सरफेस यानी इन दिस केस वॉल पर जाके बाउंस करती है एंड इट क्रिएट्स एन echo. I hope you guys understand what echo is and what are the different mediums of sound through which it travels. See you guys in the next video.